Good morning, children. Now your objective and subjective paper are finished. So let's start for solution of your periodic test 2 objective question paper. Okay. Now in your question paper, question numbers have changed. Okay. आपके क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चन नंबर्स चेंज हैं बट योर ऑल क्वेश्चंस आर सेम. लेकिन आपके सारे क्वेश्चंस क्या हैं? सेम है. ओके. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 1 you have given tick the correct answer. Now you have given some question in objective form. Now you select your correct option then tick. Okay. Now in A part you have given 99 is same as. 99 किसके तरीके से है? You have given 3 options IC, IX, IX and XC, IX. Since IC and IX means nothing, therefore third option is the correct option. And XC means 90, IX means 9. 90 plus 9 is 99. Okay. That means your third option is the correct option. Now in second part you have given Roman numeral I can be subtracted from only from V and dash. रोमन नंबर आई सिर्फ किन दो रोमन न्यूमरल में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है? एक तो वी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं और दूसरा किस में से करते हैं? आई को आई से नहीं करते, एक्स से करते हैं. एल के पहले भी आई नहीं लगता है. सब्ट्रैक्शन फॉर्म मीन्स यू यूज़ आई बिफोर योर रोमन न्यूमरल. ओके. रोमन न्यूमरल के जब पहले आई यूज़ किया जाता है तो सब्ट्रैक्ट होता है. नाउ एक्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन. वी राइट आई वी मीन्स वॉट? आई वी मीन्स वी मीन्स 5 and IV means 4. 5 minus 1 is 4. X means 10. 10 minus 1 is 9. Okay. So we use only I. We can repeated I only V and X. इसके पहले ही हम लोग यूज़ करते हैं. Okay. That means your second option is the correct option. Now in next part you have given what is 5 hundreds plus 15 tens. 5 hundreds means 500, 500. Okay. And 15 tens means 15 in tens we use 10, in hundreds we use 00. Now plus means you add your numbers. 0 plus 0 is 0, 0 plus 5 is 5, 5 plus 1 is 6. 650 is the correct option. Okay. That means your option number first is the correct option. Now in next part you have given 100 more than 99,999 इक्वल्स. 99,999 में जब 100 मोर करते हैं, ज़्यादा करते हैं, दैट मीन्स प्लस करते हैं, तो किसके बराबर होता है? नाउ यू ऐड 100. ओके. 99,999 प्लस 100. 9 प्लस 0 9, 9 प्लस 0 9, 9 प्लस 1 10, 0 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 0 1 कैरी, 9 प्लस 1 10. That means what? 1,99,000 is the correct answer. Okay. Now you tick your option number second. Okay. Now in next question you have given multiplicand into multiplier is equal. Multiplicand into multiplier means you have given two numbers. Okay. When we multiply our two number then we get what? Quotient, product और production. We get product. हमारा आंसर जो मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Product. Okay. Now your second option is the correct option. Now in next question you have given 1 week is equal dash seconds. We know that use for rough copy for your solution. Okay. Now 1 week is equal for dash seconds. We know that 1 hours is equal 3600 seconds. Okay. And 1 day is equal how many hours? 24 hours. So product 3600 by 24. Now use rough side. 36 24s are 4 6 are 24 4 2 carry 4 3s are 12 13 14 2 6 are 12 2 1 carry 2 3 are 6 1 7 4 plus 2 6 7 plus 1 8 864. Now write here 864 and put 00 because you have 00 in 3600. Okay. Now your answer is 86,400 second. In 1 day, for 1 day we have 86,400 seconds.
Now in 1 week we know that 1 week is equal 7 days. So we multiply 86,400 by 7. Okay. Now 864 7 ja 6,048 and put double zero. Then you get what? Ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 6 lakh for 4,800 seconds. Okay. Now this is your correct option. That means you have given your first option. First option is the correct option. Okay. Now take your first option. Now in next question, you have given the product of all odd numbers between 2 and 10. जितने 2 और 10 के बीच में ऑड नंबर्स होते हैं उन सब का आपको प्रोडक्ट बताना है. वी नो दैट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 2 and 10 is equal 3, 5, 7 and 9. That means numbers which are not divisible by 2. वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स. ओके. नाउ 3, 5, 7 and 9 बिटवीन 2 and 10. नाउ प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स 3, 5, 7 and 9 is equal 3 multiply 5 is multiply 7 is multiply 9. 3 5s are 15, 7 9s are 63. Okay. Now 15 63s are, you multiply your number. 3 5 3s are 15, 5 6s are 30 31, 1 3s are 3, 1 6s are 6. Now add your numbers, you get 945. That means the product of odd numbers between 2 and 10 is equal 945. Now your second option is the correct option. Okay. Now in next question, H part you have given 1, 4, 9, 16, 25 dash. For pattern, that means missing number, firstly we find difference between two numbers. दो numbers के बीच का पहले हम difference find out करते हैं. Okay. Now for difference, you write your number. 4 minus 1, 4 minus 1 is equal 3, 9 minus 4 is equal 5, 16 minus 9 is equal 7, 25 minus 16 is equal 9. That means when we subtract our two numbers, then we get 3, 5, 7, 9. Then next number is what? 11. Okay. Now 25 plus 11 is equal 36. Okay. Now 36 is the correct answer. Now you have given 36 in third number. That means your third option is the correct option. Okay. Now in next question you have given 452 rounded off to the nearest tens equal. For nearest tens we see only our ones place. Okay. If ones place is less than 5, therefore the whole number is rounded off to 450. अगर ये आपका 2 से 5 से लेस है तो ये 50 ही रहेगा. ओके. सो ए और फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन 450. नाउ इन नेक्स्ट नंबर जे पार्ट यू हैव गिवन द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड. जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? मिनुएंड, डिफरेंस, सब्ट्राहेंड. सब्ट्राहेंड इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. नाउ सी पार्ट इज द correct option. Now in next question, question number 2, you have given fill in the blanks. You have given in fill-ups some options, but I write only answer here. Okay, मैं सिर्फ यहाँ पे answer write करूँगी. Now in A part you have given 11,111 plus 22,222. Now equal 22,222 plus dash. We know that by addition property right side is same as left side. Okay. right side बिल्कुल left side के same होता है, इसलिए you write 11,111 in right side. Now for B part you have given 82,879 plus 0. We know that when we add 0 or subtract 0 to any given number, then we get the number itself. That means your answer is same, 82,879. Okay. Now in C part you have given 72,998 minus dash is equal 0. We know that by subtraction property when we subtract same number then we get always 0. Okay. That means you write here 72,998.
Now in next question you have given when minuend is equal subtrahend, अगर minuend और subtrahend दोनों equal हो जाएं then difference is equal what? Difference is equal 0. Why? Because when you write 3 minus 3 minuend is equal subtrahend हो जाए then difference is 0. 3 minus 3 is 0. So write here 0. Okay. Now in next question you have given the answer in subtraction is called. जो हमें subtract करने पे आंसर मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? Difference. Okay. Now difference is the correct option. Now in next part you have given the answer in addition is called. जो एडिशन का आंसर होता है उसे क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं. ओके. एडिशन के आंसर को सम, सब्ट्रैक्शन के आंसर को डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन के आंसर को प्रोडक्ट बोलते हैं. इज इट क्लियर? नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव गिवन व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ. जब किसी नंबर को उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं लाइक दिस देन वी गेट व्हाट? 0. ओके. द डिफरेंस इज 0. तो डिफरेंस क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. ओके. नाउ 0 इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव गिवन राइट ट्रू और फॉल्स. अब आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स राइट करना है. यू हैव गिवन टू ऑप्शंस, ट्रू और फॉल्स. नाउ इन ए पार्ट यू हैव गिवन नंबर 40 इज रिटन एज LX. 40 को LX राइट करते हैं. नो, LX स्टैंड फॉर 60 because L means 50 and X means 10. 50 plus 10 is 60. So it is false. Okay. Now in next number you have given XLV. XLV means what? XL means 40 and V means 5. 40 plus 5 is equal 45. That means true. Now in next part you have given 10 less than 100 is written as. 10 less than 100 means 100 minus 10 क्या होता है? 90. How to write 90 in Roman numeral? Roman numeral XC. That means your statement is true. Okay. Now in next number you have given number 13 is written as IIX. No, IIX means nothing. We use I only one time before a Roman numeral. हम लोग वन टाइम सिर्फ रोमन न्यूमरल में आई और वी के पहले ओनली वन टाइम रिपीट करते हैं. ओके. नाउ दैट मीन्स इट इज़ फॉल्स, रॉन्ग. नाउ राइट हियर फॉल्स. नाउ इन नेक्स्ट नंबर यू हैव गिवन नंबर 75 इज रिटन एज. 75 को कैसे राइट करते हैं? LXXV. L means 50, 10 plus 10, 70, 50 plus 20 is 70 plus 5, 75. That means your statement is true. Okay. Now in next number you have given number 29 is written as XXV 4 times I. We repeat I only 3 times. I and X only 3 times. हम लोग I और X को सिर्फ 3 बार ही यूज़ कर सकते हैं. That means your statement is false. Okay. Now in next part you have given the numbers to be added are called the addends. जिन नंबर को हम लोग ऐड करते हैं उन्हें addends कहते हैं. ट्रू, सही है. जो नंबर्स एडिशन के फॉर्म में दिए रहते हैं लाइक 2 plus 3, now 2 and 3 are called addends. Okay. Now your statement is true. Now in next part you have given when a number is multiplied by 0. जब किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं द प्रोडक्ट इज़ नंबर इटसेल्फ. तो हमें वही प्रोडक्ट मिलता है, वही नंबर. नो, फॉल्स. वी गेट नंबर इटसेल्फ व्हेन वी ऐड 0 और सब्ट्रैक्ट 0. नॉट इन मल्टीप्लिकेशन केस. मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 मिलता है, नॉट अ नंबर. वही नंबर नहीं मिलता है. ओके. दैट मीन्स योर स्टेटमेंट इज फॉल्स. Now in next question you have given match the following. Now in match the following you have given some options but only write, I have only write here answer. Okay. Now in A part you have given 46. How to write 46 in Roman numeral? XLVI. Okay. Now you have given XLVI is the correct option. Now for 74 you have given 3 different Roman numerals. Now 74 the correct answer is LXXIV. L means 50,
10 plus 10, 70, and IV means 474. Okay. Now 88, how to write 88? L means 50, 60, 70, 80, and for 8 we write V triple I. Okay. That means L triple X V triple I is the correct option. Now 7 8s are, firstly read the table of 7. 7 8s are 56. So 56 is the correct option. Okay. Now you have given in next question 2019 plus 1. 2000 plus 19, 2019 plus 1. We know that when we add 1 to the any given number, then we get just after number of the given number. Now just after number of 2019 is 2020. Okay. Now 2000 minus 1, we know that when we subtract 1 to the any given number, then we get just before number of the given number. That means 1999 is the correct option. Okay. And you use rough side for your addition and subtraction work. आप ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए रफ साइड भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ यू हैव गिवन इन नेक्स्ट नंबर L double X. L double X, L means 50, 10 plus 10, 70. Okay, 50, 60, 70. And how to write 70? 70, 70. Now in next number you have given XC. XC means what? X means 10 and C means 100. 100 minus 10 is 90. Okay, 90, 90 is the correct option. Now in next number you have given write greater than, less than, or equal to. Now you have given three options in your each part. Now in A part you have given L divide V. L divide V. L means what? L means 50 and divide V means 5. 50, how many times you read 5? 10 ja 50. Okay. That means when we divide L divided by V, then we get 10, and in right side you have also given 10 in Roman numeral. That means both sides are equal. आपको लेफ्ट साइड में भी 10 ही दिया गया है क्योंकि जब 50 को 5 से डिवाइड कराएंगे तो 10 मिलेगा. ओके. एंड आपको राइट साइड में भी L दिया है जो कि रोमन न्यूमरल में राइट किया जाता है. नाउ बोथ साइड्स आर इक्वल. Now in next part you have given LX double I. LX double I means LX means 62. Now 62 minus 2 is 62 minus 2 is equal what? 60 in left side, and in right side you have given 50 plus 10 60 plus 4 64. Okay. In right side you have given 64. 64 is the greater number. So you use less than sign for left side of your given number. Okay. Now in next question you have given 83 and right side you have given L triple X. L triple X means 50 plus 10 60 plus 10 70 plus 10 80. In left side you have given 83, right side you have given 80. 83 is greater, so use greater than. Okay. Now next question you have given XLV. XLV means what? XLV means 45. In right side you have also given 45. That means both sides are equal. Now in next question you have given 4810 multiplied by 0. We know that when we multiply 0 to any given number, then we get always 0. अगर हम कितने भी बड़े नंबर या कितने भी छोटे नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 मिलता है. दैट मीन्स योर लेफ्ट साइड इज़ 0 एंड राइट साइड इज़ 4110. दैट मीन्स राइट साइड इज़ ग्रेटर, सो यूज़ लेस देन साइन फॉर लेफ्ट साइड ऑफ योर नंबर. Okay. Now in next question you have given, that means last question you have given 2000 minus 1. 2000 minus 1 is what? 2000 minus 1 is 1999, and right side you have also given 1999. That means both sides are equal. Okay. Now student, you revise your all question from with the help of your video, and you solve your all questions in your rough copy for your revision work. Okay. Thank you.